है सौरभ, कुछ डाउट है? सर एनरोलमेंट का क्या करना, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं समझा नहीं मैं क्या। एनरोलमेंट एनरोलमेंट फॉर्म का हो गया ना, मैंने कल मैसेज डाल दिया था ना ग्रुप पे कि सबका हो गया बराबर। सब ठीक है, मतलब उसमें और कुछ अपलोड करना नहीं है ना। नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेट वो भेजना होगा ना यूनिवर्सिटी में, ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेट। वो लाना है ना, सिर्फ कॉलेज से सिर्फ लाना होगा ना। हम्म। बाकी और तो उसको सबका। अपलोड कहीं नहीं करना है, मतलब हाँ। लाकर। हाँ। हाँ, बाकी तो मैंने सबका पूछा है, सबका सही है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो एडमिन वाले कॉल करेंगे आप लोगों को। ऐसा तो हाँ, कुछ मैम ने नहीं है। कॉल किया था, उन्होंने बोला ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने के लिए सर। ठीक है ना। सर ये इनरोलमेंट की स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है? इसकी इनरोलमेंट की लास्ट डेट और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट स्कॉलरशिप की तो 28 फरवरी है ना। कितनी सर? 28? हाँ, 28 फरवरी। और इनरोलमेंट का? एनरोलमेंट का तो वैसे 15 था, लेकिन अभी हो गया ना आपका, सबका हो अरे ही गया सर ना। वो कॉलेज को अभी कॉल करे, कॉलेज से लाने का फॉर्म, कॉलेज वाले बोलते हैं अभी शिव जयंती है, बंद है, ऐसा है वैसा है, बाद में आओ। कल चले जाओ, परसों चले जाओ ना। परसों हाँ भी बंद है। परसों, हाँ परसों सैटरडे को ओपन रहेगा, सैटरडे जाना पड़ेगा। सैटरडे को चले जाओ। ठीक है, देखते हैं। सर अपने बैच में एक और स्टूडेंट है बिजली से। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बराबर मुझे। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, तो मतलब उसका अभी मतलब विदाउट ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया मतलब एनरोलमेंट का, लेकिन मुझे तो उन्होंने फ़ोन करके मतलब लाने को एनरोलमेंट है। हो जाता है, एनरोलमेंट का मसला नहीं है। आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, इधर भेजेंगे ये लोग। सिटी बंगला में वेरिफिकेशन में भेजेंगे, तो वो टाइम पे ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेट लगेगा। नहीं सर कि मतलब स्टूडेंट का विदाउट उसके भी हो गया इसलिए। हाँ, हो जाएगा ना, एनरोलमेंट हो जाएगा, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। जब वेरिफिकेशन होगा ना, वेरिफिकेशन में वो लगेगा। फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए लोग भेजते हैं इधर से। जब माइनॉरिटी के लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है ना? माइनॉरिटी के लिए लगेगा ना, इनकम सर्टिफिकेट नहीं। उसमें तो आपका वो डिक्लेरेशन रहता है ना, कुछ तो बट परफॉर्मेंस वहाँ ये। चॉइस आ रही है, डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, यस और नो, तो नो पे क्लिक करके आगे जाने का ना। ये देखो, ये सारे टेक्निकल चीजें है ना, वो आप एडमिन वालों से ही पूछ लो, बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकली दैट मच इनटू इट ओके ना। ओके ओके। हाँ ठीक है। आप अभी मैं कुछ बोलूंगा आपको, अगर वो गलत निकला तो फिर अगेन हाँ टेक्निकली वी आर नॉट इनटू दैट। तो आप जो नंबर्स मैंने भेजा है ना, उनसे हाँ आप हाँ पूछ ओके लीजिए। ठीक है। सर वो नंबर पे कुछ रिप्लाई नहीं आता, फोन ही नहीं उठाते वो लोग। तो वो लोग बहुत बिजी रहे, तो मैसेज ड्रॉप कर दो ना, एक मैसेज ड्रॉप कर दो। ये लोग उनको कभी, जैसे आप लोग कॉल मैसेज का भी तो करेंगे, रिप्लाई आना चाहिए ना। बहुत मुझ कुछ क्वेरीज अगर है तो मुझे मैसेज करो, मैं उनको पूछ लेता हूँ, मेरे मैसेज का रिप्लाई करेंगे अगर स्पेसिफिक क्वेरीज अगर है। मैम को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता उनके पास। तो अगर एक दिन कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज में आकर उनसे डिस्कस कर लो रिटर्न में, अगर ज्यादा क्वेरीज है तो। या जो इधर पनवेल में कोई इधर रहता है ना आसपास में, जैसे सुमेर है ना, तो उनको सारी क्वेरीज आप भेज दो, फिर वो आके डिस्कस कर लेगा। टेक्निकली देखो वो लोग ही बता पाएंगे, हम लोग वी आर ऑल प्रोफेसर्स ना, हमको उतना आइडिया उस चीज का नहीं रहता है जितना वो लोग, क्योंकि वही काम करते हैं ना वो लोग। जी सर। दे आर मच इनटू इट। और वो चेंज होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट ईयर ऐसा था, अभी जैसे एनरोलमेंट फॉर्म का लास्ट ईयर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। ये साल कुछ बहुत सारी चीज चेंज किया उन्होंने। ऐसा रहता है, तो वो लोग उस चीज में, तो उनको अपडेट वगैरह रहता है उसके बारे में। सर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए 2-3 दिन तो है ना अभी देने के लिए वहाँ। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए 2-3 दिन तो है ना अभी वहाँ जमा करने के लिए, मतलब आज तो नहीं जा पाएंगे, कल छुट्टी रहेगा। सैटरडे को लेके आ जाओ, तो सैटरडे को तो मिल उनको ऑफलाइन बट ऑनलाइन। सर सैटरडे तो बंद रहता है मेरा कॉलेज वहाँ। तो फिर मंडे को चले जाओ। आज तो नहीं जा पाओगे ना, मंडे को चले जाओ।
मंडे को क्या करो काम, आप कॉलेज उधर चले जाओ, उधर से इधर आके दे दो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके। Okay, we'll start with the lecture, na? Fine. And there are 11 only. So someone is asking for joining. Please check group. आएगा, मैंने उसको ऑटो ऑटो ज्वाइन का वो दिया है। 13 स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं। फाइन। So अभी देखो, today what we are going to do ना, we are going to discuss the theoretical aspects, but in the exam देखो, exam में ज्यादा theoretical aspects will not, cannot, मतलब उसमें application point of view questions will be there. So basically civil engineering applications, we'll do one or two civil engineering applications also of two theorems we are going to study today. One is total probability theorem and another is Bayes theorem. So we will discuss total probability theorem right now, and then I will give some two or three numericals, and you find out the answers and you tell me. Fine? Okay. So mathematics, probability statistics is more of solving, है ना? जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करो तो I appeal to you all that you keep a calculator and pen with you. Initially take a theory and all, एक आधा घंटा you can just listen, and afterwards you just keep a calculator and pen and this with you so that you can solve. Okay, in the classroom अपना physical जब lecture चला, that started with module 3. मॉड्यूल 3 का एक आधा पार्ट किया था ना, मॉड्यूल 4 स्टार्ट किया था. So that we'll see after we will finish this and then we'll again go back to the, you know, मॉड्यूल में हम लोग करेंगे. तो फिलहाल we'll just discuss about module. This all which we are discussing today is a part of module 1. Fine. Screen is visible to all? Yes, sir. No, sir. हाँ, एक मिनट. अब दिख रही है? Yes, sir. So basically look, there are two theorems. One is law of total probability and another Bayes theorem, जो आपके काम के हैं. Syllabus point of view they are important. But these two theorems are important from your you can say subject point of view. ठीक है? So पहले law of total probability देख लेंगे हम, and Bayes theorem is just an extension of law of total probability. It's a very simple law, but उसका context में उसका application आपको समझना, because you have to use it appropriately. If you get it wrong in the exam, you'll lose your marks. So just see, law of total probability क्या है? When direct calculation of probability is not known, then it is easier to divide an event into smaller parts and calculate their probability and take weighted average of them. Weighted average means what? Anybody can give me an example of weighted average? कोई एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ में. जी सुने हो कि नहीं सुने? वेटेड एवरेज सुने हो कि नहीं सुने हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है Yes, नहीं? sir. Yes, sir. ऐसा खामोश बैठोगे तो मुझे फिर डाउट होगा मेरा नेटवर्क है नहीं है. वेटेड एवरेज किसी ने नहीं सुना है? वेटेड एवरेज हमारी यू कैन से कॉमन थिंग ना, कॉमन फिनोमेना. ठीक है, आई विल टेल यू. आपका जो सीजीपीए वगैरह कंप्यूटर होता है ना, इट इज अ वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज मींस व्हाट? वेट्स आर गिवन. मोर वेट्स, इवन पर्ट के प्रॉब्लम्स किए आपने? सी कंस्ट्रक्शन में पर्ट के प्रॉब्लम्स किए होंगे आप लोगों ने. Yes, sir. याद है? पर्ट के प्रॉब्लम्स किए होंगे. याद है? भूल गए? Yeah, Yes. पर्ट इन द पर्ट न्यूमेरिकल्स, if you see there are three time estimates ना, उसमें जब we do not take average of the three ना, we do not do TO plus TP plus TE divided by 3, ऐसा नहीं करते ना. हम क्या करते हैं?
1 टाइम TO लेते हैं, फिर 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम लेते हैं, 4 TM लेते हैं प्लस 1 TP. ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 1, we give it 1 weight. Pessimistic time we give 1 weight, and 4 weights we give for most likely time, है ना. तो that is an example of most weighted average. वैसे आपका जो CGPI कैलकुलेशन होता है ना, सेमेस्टर ग्रेड, जैसे अभी देखो अभी 4 क्रेडिट का कोर्स है तो उसको 4 क्रेडिट मिलेंगे, 1 क्रेडिट का कोर्स है तो उसको 1 क्रेडिट मिलेगा, isn't it? इवन आपका जो परसेंट रिजल्ट एंड ऑल कैलकुलेट होता है ना, इवन बी में जो हुआ और अभी भी जो होगा एमई में, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेटेड एवरेज. वेट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू उसका सिग्निफिकेंस, जितना सिग्निफिकेंस है उस हिसाब से वेट्स रहेगा, ठीक है. मोर द सिग्निफिकेंट मोर वेटेज विल बी गिवन, isn't it? So उस तरह से वेटेड एवरेज निकालते हैं. तो टेक वेटेड एवरेज ऑफ देम. दिस कैन बी डन यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, पहले कंसेप्ट समझो. लेट B1 B2 B3 से लेके Bn Bn म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मींस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? बोलो ना, इतना सिंपल चीज है. Mutually exclusive means what? No entity of B1 is common to B2. No entity of B1 is common to B2 means what? B1 के जो भी elements अंदर B1 है, those will be separate from B2. If you compute B1 intersection of B3, it will be null event. If we compute B1 intersection B2, it will become a null event. यानी कुछ भी नहीं है. No element of any event from B1 to Bn is inclusive of each other. यानी सारे events क्या exclusive means there are different elements in each of events whose union gives the sample space. इसको क्या बोलते हैं? ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? ये सिंबल कौन सा है? ओमेगा. ओमेगा. ठीक है, गुड. It gives a sample space. You can call it by any name. Omega बोलो, आपके context में B कुछ भी एक name space, because it is a space ना. You can give it a U or whatever, because you will be confused with U and this ना. आप space का नाम दे दो. They have defined it as omega. Let okay. Hence the event B constitutes a partition of. Hence the events B1 से लेके B1 constitute a partition of this entire space. Now consider an event A which is also a subset of, है ना, this omega. So what we did the other day, we had seen the male patients diabetic, female patients diabetic, ये सब में example वो लिए थे. So a male patient may be diabetic, may not be diabetic, he may be overweight, ये सारे वैसे events हैं, समझ रहे हो? So this is an event of, say suppose some category of patients. So उसमें every, you can say, different attributes can be there. So B, now consider event A as a subset of omega. This event can be represented as A intersection omega, because इसमें जो भी, because it's a subset, तो इसके अंदर जो भी elements होंगे वो सारे इसमें common होंगे ही ना, outside this space. So every element of A is, if you compute the A intersection omega, it will give A itself. Fine. So now we know omega is what? Omega is combination of B1 union B2 union B3 union B4 से लेके union Bn तक. These are all elements. So in short, law of, if you see the multiplication, if you see the if you see the probability, laws of multiplication and laws of वो सारा जो probability का ये है उसमें, if this is the case, you can simply write in this manner. It is a combination of union of intersection B1 union of A intersection B2 union of, so this all cases, this all you can say, it can be derived, or it can be simply written in this manner. Since B1 B I are the mutually exclusive events, probability A क्या होगा? This is A, right? So simply probability A करना है, so we need to do probability of this entire thing. So probability of A1 will be probability of A intersection B1 from here. Union means plus probability of, देखो probability जब भी हम अप्लाई करते हैं ना, when there is union we'll put a plus sign simply, ठीक है. So this ये सारा होगा. So उसका सारों का summation where k goes from 1 to n है ना, ये सारा का जब 1 2 3 ऐसे values है,
तो 1 to n जब करेंगे तो it can be simply written as probability of A is nothing but summation of 1 to n probability of A when event B has already occurred and probability of event B. This theorem we know. इसको हम क्या बोलते हैं? हमने जो conditional probability किए थे ना, conditional probability का भी if you need to really substitute, we can just substitute it in this manner. Simply, and now there are again two cases. Is it making sense? अभी तक समझ रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, we will take examples तो समझ में आ जाएगा। ये theorem याद रखो, theorem will not be asked to derive. In the exam, you remember it is not an M4. Just a moment, दुआ का मैसेज क्या है? दुआ is not in. We'll take an example so it will become more clear. तो प्रायर देखो दो पॉसिबिलिटीज होगी। प्रायर प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो चीज होती है ना, एक होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी, यू गिव अ कंडीशन कि दिस पर्सन इज मेल, इट इज अ कंडीशन। नाउ ही इज डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक विल बी अगेन ना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो बात को? समझो, प्रायर प्रोबेबिलिटी आपने बोल दी तो पेशेंट इज मेल, तो नाउ व्हाट इज द केस दैट ही इज डायबिटिक, दैट विल बिकम अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। आपको अगर पता ही नहीं है कि मेल पेशेंट है फीमेल पेशेंट है तो दैट विल बी अगेन ना, you need to compute the total probability. लेकिन conditional probability में क्या होता है? conditional probability में you know a particular condition, है ना? या तो मैंने आपको बताया that the patient is male, so you will not now be needed to compute the whether he is diabetic or he is non-diabetic. ये हो सकता है. Second condition can be I give you that the person is diabetic. Now the probability which you need to compute, the posterior probability which you need to compute may be what? Whether he is a male or a female. आज समझ रहे हो? We are considering only two classes for simplicity, or rather you can say male or non-male इस केस में। समझ रहा है? हाँ, तो prior probability is an initial probability value originally obtained before any additional information is obtained। यानी ये information से will take a case, simple case हम लेंगे of a male patient। The patient is male. Posterior probability is a probability value that has been revised using additional information that is later obtained। यानी हमको whether he is diabetic or non-diabetic हमको किस पे डिपेंड होगा? On the male. Suppose there are 80 males है ना and 20 females, and the probability of male patients having diabetic is more, तो है ना normal probability होगा मेरा बहुत कम आएगा। लेकिन suppose if a female patient comes, so if I want to diagnose it properly, even अभी COVID के we will also take some examples related to COVID, so how the probability of spread and all is a probability का खेल है। how they determine and all, how they do based on the probability। Very you can say good area or niche area is there where various models are developed कि कितना spread होगा क्या होगा, है ना। many people had predicted के before even the lockdown was announced and all ना, many models were there which predicted that although China and all में सब रुक गया है COVID-19 का spread, but India में a time will come where we have so many million patients, है ना। ये models ने predict किया था, and that, on that basis lockdown and all these things were announced, but still it happened, it went ahead. That is a different thing. Maybe people were people did not observe that firmness and they were just lax in their attitudes and all ये सारी चीज होने की वजह से what happened was the cases increased। but again इसके models and all were there। China was able to control, why? Because it had done a very good policing in their particular place and they had really done a commendable job to spread the spread of virus। again अभी इसमें भी debatable है कि China whether it purposefully planted the virus or something like that, that is again a debatable thing। but again in terms of pure mathematics we'll assume that of course there are even US and all में क्यों इतना spread हुआ, because they had the models and all, but still they could not है ना take proper decisions at adequate times। so therefore again है ना due to many reasons they did not enforce the lockdowns and all, and the spread was quite fast। so in this case समझो अभी suppose probability of A is what? a male patient, है ना। suppose 100 में से 80 are male, तो probability of male patient will be 0.8,
and probability of this, suppose this is diabetic, so what is the, and probability of this is, suppose this is known, diabetic patient being male, suppose 80 में से, if this is known, suppose 40 patients are diabetic, so 80 में से 40 कितना हो गया, it will simply be this value will be 0.4 because that is known, है ना, so you can compute easily the value of B, the total entire value is 0.4, तो B का value आपली easily का इसी तरह what is the probability that if the patient is diabetic he will be, so these are computations, this sort of computations you need to do in civil engineering terms. अभी जो मैं आपको PPT में example बताऊंगा नॉन सिविल के examples होंगे, but when we'll solve the numericals, we'll solve the numericals in terms of concrete cubes and all these type of numericals, right? But interesting numericals है, and you can expect 5 to 10 marks of numericals on these two terms. So similar lines, these are prior A1, A2, A3, B1, B2, B3 जो भी है, these are prior probabilities, right? और जो भी है condition dependent है, those are posterior probabilities. So probability of A1 to occur given that probability of event is B as already there. Suppose ये diabetic है, ये पता है, उसका probability हमको निकालने के whether it is, है ना, whether the patient is diabetic male हमको निकालना है, तो अगेन सिंपली और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम इधर आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज दिस फॉर्मूला यू हैड ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला हमने लास्ट वीक में सैटरडे में देखे थे कैसे आया था, so this all this can be there and then this PV can be generalized to this form, right? So ये फॉर्मूला बनता है. Take this example, it will become more clear. ठीक है, अगर theoretical part था, theoretical part is I will not say difficult, but it is a bit confusing. It is not that difficult. Now I am saying not difficult because I am can say I am teaching this subject, na? But maybe from your point of view you may find it a bit difficult. But I can assure this is not difficult. Of course, it is a bit confusing at first. अब जब उसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, एक example I will take. It will be very clear to you that this is very easy. देखो. समझो इसको, ठीक है, and I'll ask you some questions on this. A company sells a certain type of car which it assembles in one of four possible locations. कार सेल कर रही है, ठीक है, 4 उसके प्लांट्स है, सपोज एनी कंपनी टाटा बोलो या एनी कंपनी होंडा, एनी कंपनी इज देयर, इट इज मैन्युफैक्चरिंग कार्स and it is assembling in 4 different locations. Plant 1 supplies 20%, इधर डायरेक्ट इसने परसेंट दे दिया है. Now in the exam you may not be direct percent नहीं होगा, values होंगे, numbers होंगे, इससे आपको percent देना पड़ेगा. This type of variation can be there in the exam, ठीक है, but you need to understand ये simple problem है, you need to convert it into percentages at first. So plant 1 supplies how much? 20%. Plant 2 supplies 24%. Plant 3 supplies 25% and plant 4 30%. इसका एडिशन आपको देखना है कि 100% होना चाहिए. If not, that means there is another plant 5 which is not taken into account here. बात समझ रहे हो? What you need to check here is addition 100% है कि नहीं, चेक करो है कि नहीं. आ रहा है सर, आ रहा है. Okay, good. A customer buying a car does not know, ठीक है, कस्टमर जो भी बाय करेगा उसको क्या करना है कि कौन से प्लांट में बना है. Customer buying a car does not know where the car has been assembled, and so the probabilities of a purchased car being each of the 4 plants can be simply written as this is percent ना, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो परसेंट मींस 0.2, 0.4, 0.25 and 0.3. ये समझा इधर तक? सिंपल है अभी? Yes sir, yes sir. Simple. Now सुनो, each car sold a 1 year bumper to bumper warranty. मतलब 1 साल में अगर कुछ भी डैमेज होता है कार में, तो they will, whatever damage is there, they will be rectifying it. The company itself will be rectifying it, provided it is not, you can say है ना, जैसे जो भी कवर होता है उनकी पॉलिसी के अंदर, they will rectify. So अभी उनके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा कि अगर प्लांट 1 में कोई चीज मैन्युफैक्चर, तो कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, इधर कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम, यानी 100 में से 5 गाड़ियां ऐसी होंगी जिनमें क्लेम होगा. समझ रहे हो ये चीज समझ रहे हो उधर? if the car is manufactured in plant 1, the probability of claim is 0.05. That means what? Out of 100, 5 cars will be, this is some research which they have done, right? Previous years के उन्होंने research किए. So out of 100 cars,
5 cars will be defective or some defect will be there and hence the claim will be raised. ठीक है, again देखो उसमें भी again there is again one debatable thing that some cars may be defective but the claim is not raised ना, people may just rectify it on their own ends, है ना, बोलेंगे क्यों कंपनी में जाना, अगर वो प्रोसेस फॉलो करो फिर टाइम जाता है ये जाता है, तो वो लोकल उससे भी सर्विस करा सकते हो, बट क्लेम रेज्ड इज, यानी जितने लोगों ने कंप्लेंट किया कितना है 5 आउट ऑफ 100, उसी तरह प्लांट 2 में 11 आउट ऑफ 100 क्लेम्स है रेज्ड, प्लांट 3 में 3 आउट ऑफ 100 है ना, प्लांट 4 में वो 8 आउट ऑफ 100. दिस मींस व्हाट, जस्ट लुकिंग एट दिस स्टैट्स वी अंडरस्टैंड दैट द मैन्युफैक्चरिंग or assembling which is done in plant 3 is quite, you can say, is better than the all other plants. ये समझ रहा है? हाँ सर. ठीक है, अब सुनो, अभी आते हैं हम क्वेश्चन पे, आप मुझे आंसर्स बताओ. फॉर एग्जाम्पल अ कार असेंबल्ड इन प्लांट 1 हैज प्रोबेबिलिटी, ये तो समझ में आया आपको. नोटिस दैट क्लेम्स आर क्लियरली नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ असेंबली, मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन असेंबली, है ना. हम ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकते कि चलो क्लेम इज 10%, ऐसा नहीं है. क्लेम विल बी डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ असेंबली. प्लांट 1 का क्लेम अलग होगा, प्लांट 3 का अलग होगा. इफ यू सी प्लांट 3 एंड प्लांट 2 देयर इज वेरी ह्यूज वेरिएशन. प्लांट 3 में ओनली 3%, इसमें 11% है. So you cannot generalize it in this one. So they are dependent. They are clearly not independent. So they are dependent. Their claims are clearly dependent of assembly location because these 4 contingent probabilities are unequal. अब देखो ये समझो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम जो होगा ना, जैसे हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम फ्रॉम प्लांट 1 प्लस प्लांट 2 प्लस प्लांट 3 प्लस प्लांट 4. इन सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम्स विल बी डिफरेंट, बराबर, isn't it? समझ गए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम फ्रॉम प्लांट 1 प्लांट, है ना, ये सब की प्रोबेबिलिटी दे आर गिवन, isn't it? ये समझ रहा है? हाँ सर. अभी लेकिन देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितना है 5% क्लेम, तो हमको अगर देखो मैन्युफैक्चर, इधर देखो प्लांट 3 में 25% मैन्युफैक्चर हुआ, हमको मैन्युफैक्चर बिकॉज क्लेम्स कम है, तो व्हाट द कंपनी पॉलिसी शुड बी, it should increase the manufacturing capacity of plant 3 because why the claims are less, right? Plant 4 में 31% cars are manufactured but claims is substantially high. So just the policy decisions and all है, ये policy decisions पे वो लोग work कर सकते हैं based on the records which they have. और simply see, अगर मुझे 0.5 है, अगर उसको really if I want to make it a meaningful thing, what I need to do is I need to compute the weighted average, है ना. 5% क्लेम है, लेकिन 5% क्लेम किसके लिए? 20% ऑफ कार्स के लिए, समझ रहे हो? अगर मुझे टोटल प्लांट की कैपिटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 5% ऑफ क्लेम कितना है? 20% कार्स के लिए. व्हाट आई डू, 0.05 इंटू 0.2 करेंगे, समझ रहे हो? समझा नहीं समझा? समझा सर. सुनो, हाँ, फिर भी जिसको नहीं समझा सुनो फिर से. प्लांट 1 का हमको टोटल प्लांट की कैपेसिटी निकालनी है. व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव गिवन द वेटेज और मैंने आपको डिफेक्ट्स भी दिया है ना, और क्लेम्स दिया रहता है, नॉट डिफेक्ट्स, दे आर क्लेम्स. सो प्लांट 1 में 5% क्लेम्स होते हैं, लेकिन प्लांट 1 सिर्फ 20% ऑफ टोटल कार्स मैन्युफैक्चर करता है. तो मुझे अगर वेटेड एवरेज लेना है तो व्हाट आई नीड टू 20% मींस व्हाट 0.2. सो 0.2 into 0.5 जब हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट 1 इनटू क्लेम ऑफ प्लांट 1. ये पूरा मुझे, है ना, P ऑफ प्लांट 1 डिवाइडेड बाय इनटू P ऑफ क्लेम बाय प्लांट 1. तो 0.05 इंटू 0.2 जब करेंगे तो मुझे इसका एक हेड मिलेगा. सिमिलरली प्लांट 2 का वैसे करेंगे 0.11 इंटू 0.24, 0.03 इंटू 0.25 एंड 0.31 इंटू 0.08. समझ रहे हो? तो सिंपली इफ आई मल्टीप्लाई दिस weighted average, what I'll get this value. So there the probability of claim is 0.0687%. that means what? 6.87%. ठीक है, समझ रहे हो? अभी इसी चीज को I'm giving you a task. सपोज अभी देखो प्लांट सबसे ज्यादा डिफेक्ट कहाँ हो रहा है, क्लेम्स कहाँ आ रहे हैं? इस प्लांट में है ना, प्लांट 2 में है.
ये नोट डाउन कर लो कहीं. I'll give you an example. I'll give a variant of this. You are noting down? यस सर. Suppose the इधर सबसे ज्यादा claims है, तो what I'll do, I'll reduce the production at plant 2 and I'll increase the production of at plant 3 because यहाँ सबसे कम है. Suppose मैं इसका 10% production I shift to this plant 3. Are you understanding? 10% of this production I shift to plant 3. है ना? Just as a policy decision. Again उसमें बहुत सारा फिर मुझे चीजें देखना होगा कि what is the space available, what is the production capacity, crew कितना available है, वो सारा चीज मुझे I need to compute, है ना? And what are the logistical arrangements which I need to do. But just for a, you can say, ideal case जहाँ पे there are not much hindrances, सिर्फ एक simple transaction हम करते हैं. पॉइंट टू प्लांट टू का 24% जो सप्लाई उसको रिड्यूस करते हैं by 10% and that entire 10% we are transferring where plant 3. Now compute the probability of claim. क्वेश्चन समझा? सर एक बार रिपीट कीजिए ना. देखो नाउ आई हैव, देखो हिस्टोरिकल डेटा से मुझे क्या पता चला है कि प्लांट 3 में क्लेम्स कम है ना? प्लांट 3 में क्लेम्स कम है, ट्रांसलेट्स टू डिफेक्ट्स विल आल्सो बी लेस एंड प्लांट 2 में क्लेम्स ज्यादा है, मतलब डिफेक्टिव कार्स भी ज्यादा मैन्युफैक्चर होगी. जो भी व्हाटएवर इज द रीजन ना, क्लेम कब आएंगे? जब वारंटी में कोई चीज खराब होती है, कंपनी की गलती की वजह से क्लेम्स आते हैं. तो what I am doing is I will increase the capacity of plant 3 because here I am getting more error-free cars and I reduce the capacity of plant 2. So 10% of the cars which are manufactured in plant 2 are shifted to plant 3. समझ रहे हैं क्वेश्चन? अब मुझे आप ये क्लेम बताओ कि what will be the probability of claim. समझा ना अभी? सर 0.01 होगा प्लांट 3. हाँ, plant 3 will be what? 0.35 होगा ना? हाँ सर, वो 10% शिफ्ट किया ना तो 35% होगा, तो 0.03. सो 0.03 तो है ही. मुझे सिर्फ हाँ आप टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम बताओ इस फॉर्म में. इस फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम है ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम? मुझे प्लांट देखो एज अ, ओके यू कैन से एज अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि मेरा कौन से प्लांट में क्या है ना. वो तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन है कि यहाँ पे क्या मैनेज. लेकिन मुझे क्या है, मुझे सिर्फ क्लेम से मतलब है. क्लेम जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी हैज टू इन्वेस्ट, है ना. वो क्या होगा, वो पैसा इज अ वेस्ट ओनली ना, इफ यू सी इन दैट सेंस. और ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, वही चीज को हम रिवर्क कर रहे हैं इन शॉर्ट. समझ रहे हो? तो ये जो 6% है, what will be the effect on this 6% when I am, है ना, I am what simply I am doing is plant 2 का जो this originally was what 0.25 0.24 into 0.11 था ना, that I am reducing to 0.14 into 0.11 and this I am increasing to 0.35 into 0.03. तो देखो कितना है क्लेम. समझ रहे ना क्वेश्चन? समझा ना? सर, एक स्लाइड पीछे करो ना. 34 ले लो. आया आंसर कुछ? एक मिनट सर.
सर 0.4535 हो सकता है क्या? होगा ही, कम ही होगा, 0.6 से कम होगा। हाँ जीरो। एवरीबडी जस्ट वेरीफाई इट। हाँ तो 0.435। यू सेंड योर दिस टू द ग्रुप। ये तो प्रेजेंट तो आप नहीं कर पाओगे, मेरा प्रेजेंट चालू रखा है। आपका फोटो फोटो किसके भेज देना ग्रुप पे, व्हाटएवर यू हैव सॉल्व। एक सेकंड सर। सबको सेम ही आंसर आना चाहिए, बस वन वेरिएंट ओनली वी हैव चेंज्ड। सर ग्रुप पे भेजा मैंने। Fine, good. Everybody check if you are getting the same answer. Yeah, this is right. सर सेकंड में से 10% कम किया है ना, तो वो 14% इंटू 0.24 होगा, और थर्ड का 0.03 इंटू 0.35 नहीं, 14 फिर इंटू बाद में जीरो ऐड पॉइंट टू करेंगे। फोर क्यों होगा? सर प्लान 224 है ना ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो उधर से 10% 3 में डाला ना। हाँ, तो 0.14 हाँ इंटू 0.24 नहीं होगा ना, 0.14 इंटू 0.11 होगा। ये ना, वेट आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, यू जस्ट चेक। काम एक करो। मिनट, 0.14 इंटू, एक सेकंड में वापस करेक्ट करता हूँ। 0.14। Anybody else just check? सर 0.0429। इन शॉर्ट है ना, 0.06 है, तो भी रिड्यूस स्टेटमेंट 0.4 0.3 जो भी है वो कम ही होगा उससे। बिकॉज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव चेंज द असेंबली ना, मैंने इधर का असेंबली इधर डाल दिया, तो बाइट लॉजिकल बात ही है कि वो क्लेम का जो क्लेम आने हैं, पहले 6% आते हैं, ऑलमोस्ट 7% आते हैं, फिर 4% ही आते हैं, तो सिग्निफिकेंटली द क्लेम्स आर हाँ रिड्यूस। सर। ये समझा सबको इधर का? हाँ सर। व्हाट अबाउट एवरीबॉडी एल्स? इधर प्रोबेबिलिटी क्लेम नहीं, नहीं रॉन्ग है। आई गेस इसका आंसर सही है, 0.04 समथिंग है ना, 0 कितना है? सर 0.0429। 29 is correct. You all just check. सर फेयर कैलकुलेशन करके भेजू वापस। नहीं, जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे ना, they will do. Okay. अरे हैदर, हैदर इज देयर, हैदर यस सर, यस सर। वेरीफाई करो। फाइन, दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। Similar lines we will see 2 or 3 numericals, then we'll take our civil engineering problem. Okay. सर धनवंती का मैसेज आ रहा है, उसको मीटिंग में इन नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ऐसे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए है ना, धनवंती है, धनवंती इज देयर। फाइन, सो
हाँ, so in the same manner what they have done ना, ये उन्होंने just sequence wise बताया, explain किया है, लेकिन it is understood. some should be, देखो या तो क्लेम होगा या तो नो क्लेम होगा, है ना. क्लेम अगर 5% है, नो क्लेम इज 95%. सो इसका अगर 12.2 है तो पॉइंट, दिस इज 0.1, so claim has to be point, if this is 0.01 claim has to be 0.19 होना चाहिए, because total addition should be 0.2, because 0.2 is the plant 1 का टोटल कैपेसिटी. समझ रहे हो? टोटल कैपेसिटी में से कुछ क्लेम होंगे, कुछ नहीं, जो बाकी के नॉन क्लेम होंगे. वैसे ही तो सबका जब एडिशन कब करेंगे, फाइनली ऑल एडिशन ऑफ क्लेम्स एंड नॉन क्लेम शुड बी हाउ मच, 1, isn't it? अभी देखो, अभी we will go a step ahead. This is the, ये तो हो गया आपका, है ना. मैंने क्लेम इज मेड, सर 0.687 में से उसका आ गया. सेकंड चीज देखो, am I audible? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. हाँ सर. Suppose a claim is made on the probability, a claim is made on the warranty of the car, है ना. कंडीशन डाल दिया उसने, क्या कंडीशन डाला है? A claim is made on the warranty of the car. ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज है. क्लेम इज मेड, क्लेम डाल दिया किसी ने, ठीक है. तो क्लेम डाला है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट 1? अगर आपको बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्लेम इज मेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार हैज कम फ्रॉम पॉइंट 1? समझ रहे हैं? इवन इफ यू सी हियर आल्सो 0.34 ज्यादा कहां से होगा चांसेस, बिकॉज वहां गलतियां ज्यादा वही हो रही है ना, क्लेम ज्यादा है तो, बिकॉज दिस वैल्यू इज हाई, 0.111 है, तो दिस विल आल्सो बी मोर. समझ रहे हो? तो जब व्हेनेवर अ क्लेम इज मेड, there is high probability that it will come from, almost say 40% of the cars are from reverse पूछ रहा है. अभी क्लेम हो गया है, somebody has claimed, what is the probability that it has come from plant 2? Plant 2 will be maximum, likewise plant 1 will be, plant 3 will be minimum. ये समझ रहा है? Point plant 2 if you see also it is substantially higher by, one reason is because it has higher claim, another reason is more number of cars are अंडरस्टूड. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लांट 1? इफ नो क्लेम इज दैट, सिंपली आपका जो क्लेम है इससे माइनस करो, 0.6 जो है ना क्लेम 1 माइनस दिस वैल्यू यू डू, यू विल गेट नो क्लेम. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम. तो नो क्लेम उसका कंपोनेंट ये होगा, क्या होगा? इट विल बी इट्स, if probability of this is, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम इज 0.6, तो उसका है ना, मतलब नो क्लेम विल बी व्हाट, जस्ट 1 minus 0.0687, so that will become more than 93% is no claim. समझा ये? या तो क्लेम हो गया था, नहीं क्लेम होगा, ओनली दो कंडीशन है, इट विल बी यस और नो, है ना, ट्रू और फॉल्स, इन दैट मैनर. सो क्लेम 0.6% है, तो नॉन क्लेम विल बी 0.9313%. ठीक है. Okay, if a no claim is made on the warranty of the car, how does this change the probability? Similar line, no claim जो है, जो अपने अंदर 0.5 लेते थे, आप 0.9 करके करोगे, तो नो क्लेम है यानी क्लेम नहीं है, तो देखो अगेन ये सारे प्रोबेबिलिटी. 0.9 कैसे है? 0.95 कैसे आया? ये वाला ना, ये वाला पूछ रहे हो ना. देखो पॉइंट क्लेम का क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.05. नो क्लेम जो नीचे ही है. या देखो, या तो क्लेम होगा या नो क्लेम होगा, दोनों का एडिशन 1 होगा, है ना. क्लेम प्लस नो क्लेम इज 1, so if claim is 5%, no claim will be 95%. समझा? सर हमने अगर क्लेम निकाला हुआ है तो 1 से माइनस करेंगे तो नो क्लेम डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. Yes, as simple as that. Understood? तो नो क्लेम के केस में अगर किसी ने क्लेम नहीं किया है, इसका मतलब देयर आर 20% चांस इट हैज कम फ्रॉम प्लांट 1, 22% या 23% फ्रॉम प्लांट 2, 26 फ्रॉम प्लांट 3,
और देखो प्लांट 3 का सब्सटेंशियली इधर ज्यादा एक्सपेक्टेड था प्लांट 4 से, बट इट इज लेस बिकॉज लेस नंबर ऑफ कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बट स्टिल इट इज अ सब्सटेंशियल नंबर। ठीक है, फाइन, समझा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझा? Yes, sir. हाँ, so now I will dictate you. Okay, what we'll do ना, अच्छा, we'll take a numerical from the civil engineering point of view. Fine. Just a moment, I'm opening the drive. पेन पेपर और कैलकुलेटर लेके साथ में बैठो। You're able to see the screen? हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? It is visible? Yes, sir. तो बोलो ना ऐसे। सो ये क्वेश्चन देखो, the results obtained after compressive strength of concrete using CTM are known to be 95% accurate. Fine. The Qs from a batch are tested and found to fail the minimum required strength of 33 newtons per mm square. सर Suppose स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख स्क्रीन रहा नहीं दिख रहा है, नहीं एली शेख कौन है? Who is एली शेख?
स्टैनली शेक के नाम से किसने ज्वाइन किया है? नहीं, हैदर शेख सर, एक्चुअली अच्छा ठीक ठीक। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ओके फाइन। Let's see the results obtained for compressive strength test of concrete from CTM. CTM मतलब कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जो आपके कॉलेज में होता है ना, कॉलेज में सॉल्व हाँ लैब सर, में होगा, कंक्रीट लैब में ब्लॉक मशीन होता टेस्टिंग है कर। फॉर चेकिंग द कंप्रेसिव। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक होता है, ब्रिक का होता है ना, बहुत सारे मटेरियल्स का जो दोज आर टेस्टेड फॉर, दोज आर सपोज टू टेक द कंप्रेसिव लोड, उसका टेस्ट होता है। तो 95% एक्यूरेट, यानी देयर इज 5% के टेस्ट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, बिकॉज समझना इंपॉर्टेंट है। The cubes from a batch are tested and found to fail the minimum required strength of 33 newtons per mm square. Suppose that the batch comes from a population of 1 lakh batches where 2000 cube batches are defective. ठीक है, अभी अभी 2000 बैचेस डिफेक्टिव है। ये क्या है? दिस इज नाउ, दिस इज व्हाट, दिस इज सम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड व्हिच इज गिवन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मींस व्हाट? डिफेक्टिव। जो अपना जो इसका क्लेम का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रायर प्रोबेबिलिटी से दिया था ना, जो अपने पॉइंट जो उसके उस टाइम पे था 0.05, 0.11, 0.03, 0.08 जो लास्ट में था, उसी तरह सपोज दैट अ बैच कम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख बैचेस, है ना, वेयर तो एक मास कंक्रीट होगा, जो भी होगा वी डू नॉट नो, है ना, some set of this question has been given where 2000 cube batches are defective. What can we conclude about the probability that the cubes under test tend to fail? बोलो क्या करोगे इसमें? सिंपली ना, जैसे अपना प्रॉब्लम को जैसे हमने लास्ट 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 न्यूमेरिकल में जैसे डिफाइन था वैसे इसमें डिफाइन करो। एक चीज क्या है, one thing is given that the test itself is 95% of chance है इधर भी एरर का। 95%। 95% सही है, लेकिन 5% the test is all test itself is wrong। वहां पे एक बायसनेस, उसका एक एरर का चांस वहां है। सेकंड इज व्हाट, वी नो के वी नो, है ना, के फ्रॉम अ बैच ऑफ 1 लाख 2000 क्यूब्स आर डिफेक्टिव। ये हमने टेस्टिंग किया है, या जो भी है, या जो कंक्रीट उसका हिस्टोरिकल डेटा है किसी के पास, किसी ने मेंटेन किया है, सपोज इट इज एन आरएनसी इंडस्ट्री और उन्होंने ये डेटा मेंटेन किया है कि सिमिलर बैचेस जब हम 1 लाख टेस्ट करते हैं, 1 लाख कास्ट करते हैं, उनमें से 2000 क्यूब्स आर डिफेक्टिव। सो 2000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इट विल बी रफली 2%। तो 2% फेलियर इधर है ना। तो probability of having a non-defective brick is how much? 98%. Probability of having a defective brick is how much? Defective cube। अच्छा, इसको ब्रिक बोलो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ब्रिक ब्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सीटीएम का छोड़ दो बिकॉज यू विल बी अगेन कंफ्यूज्ड बैच एंड ऑल। सो ब्रिक समझो, these are bricks, so the bricks are tested under some है ना, तो the test itself is found to be 95 accurate। some testing is done, various टेस्ट होते हैं ना, ड्रॉपिंग फ्रॉम 1 मीटर हाइट, मेन से वो करते हैं, जो भी टेस्टिंग करते हैं उसमें 95% एक्यूरेट है, 5% बायसनेस का वहां भी चांस है। एंड जो ब्रिक की भट्टी है, वहां पे जो ब्रिक्स बनते हैं, तो 1 लाख ब्रिक में से जब वहां भट्टी पर टेस्ट किया गया था तो 2 लाख ब्रिक्स में डिफेक्टिव। कितना समझा अभी? दिस यू अंडरस्टूड? नाउ what can we conclude about the probability that the cubes under test tend to fail? ठीक है, अभी देखो उसमें ये चीज दिमाग में डालो। पहला क्या होगा? दी क्यूब, देखो 4 कंडीशन होंगी, ठीक है। वन कंडीशन इज व्हाट? द क्यूब इज गुड एंड इट पासेस द टेस्ट, इजंट इट? समझ रहे हो? द ब्रिक इज गुड एंड इज पासिंग द टेस्ट, ये समझा? अरे बोलो ना, समझा नहीं समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर एक बार रिपीट करो ना। सर रिपीट करो ना एक बार। रिपीट करता हूँ, देखो, आई एम रिप्लेसिंग दिस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद ब्रिक्स। आपको इजी समझने के लिए मैं उसको ब्रिक से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ब्रिक का जब टेस्टिंग होता है तो जो भी टेस्टिंग होता है उसका फॉलिंग फ्रॉम ड्रॉपिंग फ्रॉम 1 मीटर हाइट, स्क्रैचिंग बाय नेल्स, फिर उसका सोकिंग है ना, ऑब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी टेस्टिंग होता है, सपोज इट इज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक एंड उसका कुछ तो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड है, तो वो जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग इटसेल्फ इज नॉट 100% फेल प्रूफ, इट हैज सम, है ना, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिक अच्छा हो और हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं फॉल्टी ब्रिक, एंड इट कैन आल्सो बी इन दिस केस दैट द ब्रिक इज फॉल्टी बट इट इज सर्टिफाइड एज गुड, दोनों पॉसिबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी 5%, बिकॉज 95% ऑफ द टाइम द ब्रिक विल डिटरमाइन इट एक्यूरेटली। ये समझा, अभी इधर तक समझा? समझा सर। इतना समझा रहे, सिंपल है। यस अभी सर। यहाँ क्या होता है, द ब्रिक्स कम फ्रॉम डिफरेंट किन्स, है ना, जैसे भट्टी होता है, डिफरेंट किन से ब्रिक आती है ना, व्हेन द ब्रिक इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट किन्स, उस किन में जब टेस्टिंग किए लोकल लोकल में या जो भी है या प्रीवियस ईयर्स में या जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उनके पास, तो आउट ऑफ 1 लाख ब्रिक टेस्टेड 2000 ब्रिक्स वेर फाउंड टू बी डिफेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये समझा? इसका मतलब क्या है, 2000 of 1 lakh, that means 2%. So 2% bricks are defective and 98% are good. Of course, दो ही चीज होगी ना, तो डिफेक्टिव होगा तो नॉन डिफेक्टिव होगा, isn't it? यस सर। अभी देखो, बिकॉज टेस्टिंग में इटसेल्फ गड़बड़ी है, तो 4 कंडीशन हो सकते हैं। वन कंडीशन विल बी, ये 98,000 ब्रिक आर टेस्टेड एंड उसमें से, है ना, 98 जो भी है ब्रिक्स आर टेस्टेड and they are found to be good. Good brick, a brick which is there, which is really a good brick, is tested and is found to be good. This is one case. Second case is a brick is there which is good, but it is tested wrongly and found to be a faulty brick or defective brick. ये case हो सकती है. Third case will be brick is defective and it is found to be good, है ना? That is also one case. And fourth case is brick is defective and it is found to be defective, which is correct, है ना? तो 4 केसेस हो गए, समझा आपको? यस सर। So what the question asks you is simple terms में, what can we conclude about the probability, है ना, कि अगर मैंने कोई एक ब्रिक रैंडमली चेक किया है तो what is the probability that it will be defective? समझा? नहीं समझा? बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन है अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझा नहीं समझा? यस सर। समझा ना, फिर कर सकते हो प्रोबेबिलिटी। I'll show you one example. आगे का जो आपको आगे के examples you have to solve, ठीक है? At this level, it is expected that you should be able to, है ना, अपना नींद से जाग जाओगे थोड़ी, be more active, ठीक है? So we'll develop a small nomenclature. Let C stand. C is more than 0, so you can give any nomenclature. Stand for bricks to pass the test, and this is for bricks to fail the test. Defective, non-defective. Can put D and H. Healthy and defective bricks is a, yeah. So probability of the Qs passing the test, है ना, provided they are healthy, is what, 0.95, isn't it? Probability of this failing the test, provided they are healthy, are is 0.5. 5% bias is there. And उसी तरह probability that it will fail the test is 0.05, and even though it is defective, but it will pass the test. Even though it is defective, it will pass the test is 0.5, and it is defective and fail the test is 0.95, because 95% is the correct. जैसे मेरे को 4 केसेस होंगे, तो अभी हम क्या करने हैं, ये देखो, the space of this particular experiment consists of 9,800 या 98,000 healthy bricks and 20,000 defective bricks. Fine. A cube randomly chosen as a probability to be healthy 0.98% है ना, randomly ना 0.98, defective is this, तो probability of healthy is 0.98 and defective, ये समझ रहा है इधर, ये समझ रहा है?
Yes, sir. डिस्कस की उसी को वी कैन गिव एनी नेम, देन नेम वी कैन गिव एनी नेम, ओनली आपको समझना इंपॉर्टेंट है. So to interpret the results properly, we can now use the Bayes theorem. तो ये Bayes theorem है जो बताता है. Again Bayes theorem will discuss in further slides. So this directly Bayes theorem they are used. So how it is used and all we'll discuss. So probability of defective bricks, provided they are passing the test, is क्या पूछा इसने, क्या probability निकालने बोला है? What can you know of the probability that the it will fail. So what is the chances of failure? The chances of failure of the bricks is 27.8%. How? Because simply they need to Bayes theorem उन्होंने use किया था. What this Bayes theorem and all is there, of course we'll do it in the future slide, but again it depends on total probability theorem का extension है. We directly Bayes theorem use किया. You take this numerical and you solve. क्या numerical लो? Okay, what this numerical says, the bricks applied to a particular construction site in Karanjande come from 4 different brick manufacturing kilns. Kiln manufactures कितना bricks है? 20,000 bricks at a time, of which 5% are defective. Kiln 2 manufactures 540 are defective. Kiln 3 and 4 and 1,000 out of 10 are defective. If during inspection one kiln is selected at random and found to be defective, what is the probability that the selected brick is defective? समझ रहा है ये क्वेश्चन? समझा? क्वेश्चन समझा नहीं समझा? हाँ सर, थोड़ा समझा, फिर से बताता मैं, फिर से सुनो. ठीक है? Bricks supplied to a particular construction site in any place come from 4 different brick manufacturing kilns. Kiln 1 manufactures how much? 2,000. This is number they have given directly. At a time of which 5% are defective. This they have done some random statistical quality analysis उन्होंने किया है. Statistical quality control SQC they have done, and they have found that in a roughly you can say 100 में से 5 bricks, यानी 5% of the bricks are defective. Similarly, Kiln 2 manufacture 500 bricks, of which 40% there is a high rate of defective bricks here. Kiln 3 and 4 both manufacture 1,000 bricks each, of which 10% probability of defectiveness is there. इतना समझा? It's easy, है ना? अब क्या है, if during random inspection one kiln is अभी आपके साइड पे kiln आपको पड़ा है, आपका जो construction site है at any place, the brick has already come to your place and it is there in your site. Now what you need to do is you need to establish that after testing, if during inspection one kiln is selected at random and the testing is done, what is the probability that the selected brick is defective? समझा? अभी हमको मालूम नहीं, जैसे अपना क्लेम का प्रॉब्लम था ना, इट इज एज सिमिलर, वेरी सिमिलर टू योर क्लेम वाला प्रॉब्लम. ठीक है? So one brick is selected at random and tested. What is the probability that the selected brick is defective? ठीक है? ये समझा? चलो बता मुझे जल्दी. बोलो. क्या हो गया सबको? यस अभिजीत. Trying to solve, sir. नहीं, उसका solve प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. अच्छा, डायरेक्टली सॉल्विंग एंड गिविंग मी द आंसर. धनवंती. हैदर. सिंपल है, जैसा आपका इसका न्यूमेरिकल है ना, तो आई हैव सेंड यू आल्सो द इमेज को भी आप देख लोगे तो भी आप कर पाओगे इसको. जो मैंने इमेज भेजा लास्ट में मैंने कहा था. सी द सर एक बार क्वेश्चन वापस स्लाइड दिखाओ ना.
Sir, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दिया है ना, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दिया है तो यू कैन जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटीज ना, जैसे अपना वो किन वाला प्रॉब्लम था। हाँ सर, सर कितने ब्रेक्स डिफेक्टिव है वो फाइंड करना है ना लास्ट में। A break is selected at random. Any break is selected at random. What is the हाँ probability it is defective? ओके दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। Sir, 500 bricks. Answer. 500 ब्रेक्स आ रहा है सर। 500 bricks Can be defective. नहीं ना, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही ब्रेक सिलेक्ट हुआ है, ओनली वन ब्रेक इज सिलेक्टेड। देखो क्वेश्चन देखो, if one break is selected, if during inspection one cane is selected, testing what is the probability that selected break is एक break select हुआ है, वो क्या probability that it is defective? Fine, simple है। I'll tell you this solution and you can think about it. Space of a sample consists of 4,000 good bricks. कहाँ से आए हैं? ये सब छोड़ दो, यहाँ से हम डायरेक्ट ला जाते हैं। We denote by B1 the event consisting of all bricks in the ith cane, and by D the event consisting of all defective. दो ही चीज है, ठीक है। Denote by B1 the event consisting of all bricks in the, ठीक है, we denote by B1, B1 is the event of all bricks in the ith cane, and by D the event consists of, अभी इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if one cane is selected at random, है, kin select करना, तो what is the probability of selecting, चार kin है, तो what is the probability of selecting one kin? चार kin है ना, kin में जाके विजिट करके उनको सिलेक्ट करना, तो what is the probability of selecting any one kin? 25%, isn't it? बराबर ना, नहीं समझा? Probability of B1, B2, B3, B4 ये क्या है? 25%. Selecting of kin is 25% because all kins are selected from them.
the probability that a particular brick from a specific cane is उसका defective ratio जो है 0.5%, हमने बोले थे ना 5%, 4%, ये सब दिया है 10%, this is what 40%, this is not 0.4, this is 0.04 नहीं 0.4 है. So these bricks are defective. Since the event B1, B2, B3, B4 form a partition of S, we conclude that defective bricks कितना होगा? इसमें 5% है, 5 divided by 25, ठीक है? This is one case. Another case देखो, ये समझा इधर तक समझा? यस सर. समझा सर. 25 क्यों नहीं आए? Because Sir, initially question में से दिया है one cane is selected at random, ठीक है? तो cane select करने में there is equal probability, right? Another case is what? इसका एक simple दूसरा variant क्या होगा? That cane is not selected at random. जो आपका साइट है, साइट में ब्रिक टेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो? तो साइट में तो यू जस्ट सी, साइट में तो नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी सेम, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक जो है डिपेंड करेंगे ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स विल नॉट बी सेम. इधर से देखो अपने पास कितना ब्रिक आ रहा है, 2000 ब्रिक किन वन से आ रहा है, तो किन वन से आ रहा है अपने सेट पे. ये अगर लिखा होगा, अभी इधर लिखा नहीं है, जस्ट मैन्युफैक्चर ना, जस्ट फॉर योर कंफ्यूज, इसमें दिस इज सॉल्व करेक्टली यहाँ पे. बट आपको क्या बोलेंगे इसमें, वन मोर वेरिएंट विल बी देयर दैट योर साइट procures 2000 bricks from kin 1, 500 bricks from kin 2, 1000 bricks from kin 3. ये वेरिएंट होगा उसमें. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अभी देखो इधर ये क्वेश्चन में क्या लिखा, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल एंटायरली चेंज द मीनिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है, kin 1 मैन्युफैक्चर्स, लेकिन मैन्युफैक्चर हुए पूरे 2000 के 2000 ब्रिक आपके साइट पे आए क्या? इट इज नॉट गिवन एनीवेयर, फाइन. बट अगर ऐसा लिखा है kin 1 manufactures and supplies 2000 bricks at a time, then in that case you cannot consider 0.25. बट आप क्या करोगे, टोटल ब्रिक्स जो है, टोटल ब्रिक्स कितना है 2000 plus 500, 2500 plus 1000 plus 1000, so total there are 4500 bricks, out of which 2000 are from kin 1, so its probability will be what, 2000 divided by 4000. समझ रहा है ये? नहीं समझा? समझा नहीं समझा, अंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड? सर ये अभी का पार्ट नहीं समझ रहे, जो टोटल का आप बोल रहे हैं ना. पहला समझा? हाँ सर. यस. हाँ सर. यस सर. तो ये न्यूमेरिकल में बस देखो, स्पेसिफिकली इट इज नॉट मेंशन्ड दैट ऑल ब्रिक्स आर सप्लाइड टू योर साइट, है ना. इसमें क्या लिखा है, kin 1 मैन्युफैक्चर्स 2000 ब्रिक्स एट अ टाइम, आउट ऑफ व्हिच 5% आर इफेक्टिव. अगर इसमें एग्जाम में वन मोर वेरिएबल, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसा आया है कि kin 1 मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज 2000 ब्रिक्स एट योर साइट, ठीक है, और अदर यू प्रोक्योर 2000 ब्रिक्स फ्रॉम kin 1 out of which 5% are defect, ऐसा अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, फाइन. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट 25%. पहला प्रोबेबिलिटी क्या था, किन्स आर टेस्टेड एट रैंडम, फाइन. इस केस में क्या है, we know the number of bricks which are coming from each kins to our site, 2000 plus 500 plus 1000 plus 1000. ये ब्रिक्स हमारे साइट पे आ रहे हैं, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. सर अभी टोटल में से हमको एक ब्रिक लेके करना है ना, 4500 में से. 4005 में से एक ब्रिक लेना नहीं है. ब्रिक डिफेक्टिव है नहीं या नहीं है, ये हमको बताना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिक बीइंग डिफेक्टिव. कोई भी ब्रिक ऑलरेडी सर हमने हर एक पिन से एक 0.25 लिया था, 25% लिया था. earlier ऐसा लिया था because there was nothing mentioned about. Yes. We had a probability of defective bricks and we had a probability of non-defective bricks. So we had taken 0.25 to 0.25 because kin was selected at random. Kin was selected at random, वो हिसाब से फिर, है ना, वो हिसाब से हमारा सारा आगे का probability आया था. इस केस में what is there, kin is not selected at random. We are given that the probability of defective bricks. What is the probability of defective bricks? We are being supplied 2000 bricks from kin 1. Total bricks which we require at our site are how much? 2500 plus 2000. It is around 4500. Out of this 4500, we know, है ना, weighted average में करेंगे. Weighted average का concept इधर आ जाएगा. Out of this 4500, 2000 bricks will be supplied from kin number 1.
so the probability will be around 0.5%. So this 2.25 जो अपने इधर है, that will be replaced by 2000 divided by 4500. This will be replaced. This will be same. 0.05, 0.4 will be same. This will be replaced by 500 divided by 2000 or 4500. This will be replaced by 1000 divided by 4500. This will be replaced by 4500. 4000. समझा ये? Okay, okay, sir. Got it, got it. समझा ना? तो इस केस में मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ. हेलो, 731 bricks. आपको ब्रिक्स के बारे में अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल ही नहीं रहे ना, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. समझ रहे हो? Sir, it's 0.016. हाँ, 0.016 में will make sense. लेकिन बहुत कम है, इतना कम भी नहीं होना चाहिए. इधर तो 5%, 4%, 10%, 0.016 नहीं होगा. सिंपल है ना? सिंपल क्या होगा? Probability of defective bricks will be what? 0.05 into 2000 upon 4500 plus 0.4 into 500 upon 4500. करो ना इसको. प्लस 0.1 into, अच्छा ये दो बार है ना, सेम चीज दो बार है, तो we'll just multiply by 2. कितना है देखो. How much is it? Point 11. 0.11 is, I feel it is correct. So yes, it's 0.11. 0.11, I believe it is correct. ठीक है. तो you need to understand what question is there. अगर आपको क्वेश्चन अगर ये पूछा और आपको 0.11 करोगे that will be wrong. है ना? क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा आ रहा है देखो. Brick is key is selected at random means what? We are not now focusing on the site. We are not focusing on the site. We are focusing on the kill. When it is said that your company, you are procuring so many bricks, है ना? तो उस केस में you will be focusing on your construction site. How many bricks are coming? So 0.11 I believe it is correct. ठीक है. अभी आगे का पार्ट देखो. तो क्या पूछ रहा है? If the inspected brick is found to be defective, what is the probability that it is come from kill number 2? अभी आपको बोला है कि हाँ ये डिफेक्टिव, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई. This brick is defective 100%. 100% डिफेक्टिव है, ये कंडीशन दे दिया उन्होंने. प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किन 2 आएगी, किन 2 से आएगी. इसमें चार चीजें हो सकती है. तो किन 1 से आएगी, किन 2 से आएगी, किन 3 से आएगी, किन 4 से आएगी. वो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो किन 2 से आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज रिवर्स में करना होता है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स इट इज डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो B2 करेंगे ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इट इज डिफेक्टिव. दिस वी नो, कंडीशन वी नो, इट इज डिफेक्टिव. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम फ्रॉम B2? तो सिंपली उसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किल्स फ्रॉम B2 व्हिच आर डिफेक्टिव इन कितना है? 40% है. दिस इज 40%. B2 में से 40% किल्स आर डिफेक्टिव. Probability of kills bricks which are manufactured in B1 upon divided by total defective bricks का probability है ना. तो इसमें 0.25 आपके केस में क्या आएगा? ये 500 डिवाइडेड बाय कितना होता है? 4500. देखो क्या सेकंड केस में 500 डिवाइडेड बाय 4500 व्हाटएवर द वैल्यू वी गेट हियर डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है 0.11 हो गया. बताओ कितना है? समझा ना? Probability of defective brick provided is come from kin 1.
Yes, all. What is the answer? Yes, Rashad. रशाद समीन बताओ आंसर बताओ। अफराज बोलो। मैंने भेजा था ग्रुप पे भेजा है, जस्ट सी द फोटो ऑफ इट एंड सॉल्व इट। कितना है आंसर? सर 0.40 है क्या? नहीं, आप लोग बताओ मुझे। आई एम आल्सो नॉट दिस 0.40 एग्जैक्ट है। आगे कुछ नहीं है, 401 405 ऐसा कुछ। 0.4040 है। ऑल एल्स कंफर्म, बाकी सब कंफर्म करो। Fine, all have got the same. Zero point 4040. ठीक, I believe this is right. Okay. Now we'll see some more. Okay, numericals, and then we'll go to the total probability Bayes theorem. We'll understand more. Fine. अब ये क्वेश्चन समझो। all are done with the numerical. अरे हुआ क्या न्यूमेरिकल? 0.4040, I believe it is right. क्यों आ रहा है बार बार? Everybody has got 0.4040. Yes, sir, I got it. 0.404. I believe that is right. ठीक है। अदर केस में अगर आपको वो kin वाला न्यूमेरिकल आए तो as it is solved here ना, as it is solved here, if you are told to find the probability of kin, उस केस में it will be 0.615. ठीक है, because we don't know which kin it is there ना, तो we give equal probability, चारों को equal probability हम देते हैं, and in that case it will come to be this. Fine. Now we'll see some more terms. Screen is visible? Yes, sir. Simple है, very simple life के examples हैं. There is so it will become more, देखो concrete के direct examples है तो आपको थोड़ा सा वो हाई-फाई हो जाता है. So what we'll do is we'll take simple example and then we'll move to civilization problems. Fine. अब देखो, an ice cream seller has decided whether to order more stock for the bank holiday weekend, है ना? उसको एक decision लेना है. अब ice cream seller has to decide
whether to order more for the bank holiday weekend, like holiday के दिन, whether he has to order more ice creams or not. He estimates that if the weather is sunny, he has 90% chance of selling all his stock. यानी पूरा का पूरा 100% स्टॉक सेल करने का उसको 90% चांस. समझ रहे हो ये? The probability of selling 100% of his stock is 90%. वर्ड समझ रहे हो जो are you able to connect what I am trying to say? All स्टॉक बोले ना 100% ऑफ स्टॉक है. ऐसा नहीं एक आइसक्रीम बेचा तो भी you can sell that I have sold. ऐसा नहीं पूरी की पूरी उसकी आइसक्रीम बिक जाए उसका कितना परसेंट चांस है उसको? 90% probability of selling all his stock. ठीक है? Are you understanding what is said here? Or I will or Yes, I sir. should Yes, sir. Got it. Yes, sir. weather is sunny, अगर बहुत ज्यादा धूप है ना? If the weather is sunny, he has 90% chance of selling all his stock. Fine. Second thing what he estimates is if it is cloudy, there is a cloud cover जहाँ पे humidity होगा, बारिश नहीं लग रही, humidity होगा, again मौसम गर्म ही होगा, he has 60% chance, है ना? And third is if it rains, his chance is only 20% because some people even in the rains they enjoy ice creams. ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसक्रीम बिकेगी नहीं उसके दिन. इसका मतलब ये कि उसकी पूरी की पूरी आइसक्रीम नहीं बिकेगी. 100% आइसक्रीम वॉन्ट बी sold. Only 20% chances that 100% ice cream will be sold. समझ रहे? This word you are understanding. This doesn't mean कि only 20% आइसक्रीम are sold. ना इसका दिमाग से वो निकाल दो. यानी 100 में से 20 आइसक्रीम बिकेंगे ऐसा नहीं है. 20% चांस है कि पूरी की पूरी आइसक्रीम उसकी 100 में से 100 आइसक्रीम बिक जाएगी. Are you getting my point? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. Fine. Now see. Conditional probability भी आगे दे रहे हैं. According to the weather forecast, the probability of sunshine is how much? 30%. The probability of last problem ने check किए थे 100%. 25 plus 45 कितना होता है? 70. 70 plus 30 is 100. Fine. If not, then you have to assume another, है ना? एक dummy आपको assume करना होगा इधर and make it 100. We assume that all this probability assume so the probability must add up to 100. 100% उसका 100 होना चाहिए. What is the probability the salesman will sell all his stock? भाई देखो ये सब फ्यूचर की चीजें हैं, हमको मालूम है ना. तो जैसे हमने ब्रिक्स का प्रॉब्लम किए, जैसे हमने क्लेम्स का प्रॉब्लम किए, वैसे दिस इज समथिंग व्हिच इज फ्यूचरिस्टिक एंड ये सब चांसेस है. दीस आर ऑल प्रोबेबिलिटीज. ठीक है? इफ देखो if it is sunny, he will sell 90% of the stock, but he doesn't know it will be sunny, it will be rainy, it will be cloudy. इसको मालूम नहीं है. Fine, but उसको कुछ forecast है, and based on the forecast he has to decide whether he will ice cream order करेगा या नहीं. Now relate this to your slab casting on your, है ना? आप RNC के ट्रक्स मंगा रहे हो साइट पे, ट्रांजिट मिक्सर मंगा रहे हो, there is a casting which is slab cast which has to be casted. These all conditions are there, है ना? So if it rains again, आपको you have to defer the slab or whatever is the reason, है? जो भी आपको decision लेना है. तो whether or not you will order the RNC trucks today, और ये नहीं आपको decide करना है. तो you can relate it in that manner. But in this case, just keep it simple. आइसक्रीम की हम बात अभी करेंगे. Fine. Now see, what is the overall probability? हमेशा याद रखो, you should not get any absurd answer. Answer should always be between 0 and 1. Probability का answer always should be between 0 and 1. Correlation coefficient का answer should always be between -1 to +1. ये दो चीज दिमाग में बिठा ही लो. There will be nothing something 4.287 या 7,000 8,000 या कुछ भी नहीं होगा. ठीक है? It will always be in some point answer. 0 point something होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 point something होगा, या तो 1 होगा. Only 3 चीजें हो सकती है. Fine. Now see. So same जैसे अपना वो total probability theorem था, where B is the entire B is A1 and A2 are different events, है ना? Now suppose ये conditions है, weather conditions है A1 A2 से ना. Let A1 be in the condition that it is sunny, A2 be in this cloudy, A3 it is rainy. वो तीन conditions है. उसमें this is some B is what? B is the probability that his ice creams are sold. Right? तो समझ रहे हो? तो A1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? A1 सनी का चांसेस डायरेक्टली दिया है 30%, A2 क्लाउडी का भी दिया है, A3 का भी दिया है.
Now if you see the beware, be with the event that salesman sells all his stock. Okay. So the other information which is given that A1 है ना, probability of selling all his stock provided A1 क्या है अभी इधर? What is A1? What is A1? बोलो. मैं कॉल names हाँ, आपको जिस नाम को पुकारेंगे इसको आंसर देना. ये दुआ is there, दुआ. अभिजीत बोलो. A1.3 है सर. A1.3 लेकिन है क्या? अभी पिछला दिया था ना सर. What is A1? It is about the forecast sir. 30% will be shiny. It is about the weather, fine. So A1 itself is not 0.3. Probability of A1, P of A1 is 0.3. Okay? A1 is not 0.3. So A1 is the condition that it will be sunny. A2 is the condition that it will be cloudy. A3 is the condition it will be rainy. So condition दिया है, condition दिया है. So what is the probability of B selling all his stock when it is cloudy? है ना? Condition cloudy, sorry, ये क्या है? Sunny है. So the probability of selling all his stock is 90%. When it is cloudy, probability of selling stock is 60%, and it is rainy, selling all his stock is 20%. समझा ये? कैसे उसने फॉर्मुलेट किया प्रॉब्लम को इसमें? यस. ठीक है. इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. Anybody has any doubt? No doubt. No, sir. Very nice. So what is the probability that salesman sells all his stock? Stock, that is B. B का मतलब है ना, selling all his stock is 0.9 into 0.3. Why 0.3 here? Because it is chances of P1 is chances of the weather being sunny is 30%. 0.9 into 0.3 plus 0.6 into 0.45. 0.6 cloudy के लिए 0.6 into 0.45 plus 0.2 into 0.25 which is 0.59. Understood? सबको ऐड करके सबको सिर्फ ऐड किया उसने. Make sense? Is it making sense? Yes, sir. ठीक है. तो अभी मैं आपको एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी देता हूं, आप करो इसको सॉल्व. I am giving you the probability that the salesman has not sold his stock, or rather salesman, चलो सिंपल वाला दे, salesman has sold all his stock. ये कंफर्म हो गया है. प्रोबेबिलिटी B अभी डिनोमिनेटर में आ गया. Salesman has sold all his stock. What is the probability that it has? What is the probability that it is rainy? What is the probability that it is rainy? समझा? क्वेश्चन समझा? Sir, repeat करना एक बार please. The salesman has stole all his stock. जितना भी stock था सब बेच दिया. What is the probability that it is rainy? 0.084. ऐसा 0.2 into 0.25 divided by 0.59. Anybody else check? Point 084 is right. Yes, sir. 0.084, 085. इसका मतलब कुछ तो समझ में आया. फाइन. चलो अभी ये नेक्स्ट वाला देख लेंगे. Good. At least you understood this now. We'll start with the next one. Now you tell me. I will not show you the solution. You tell me, and then I will show you how it is solved. First, you tell me the answers. Okay? Shall we start? I have Yes, two sir, red please. pens. Two red pens है, one green pen है, and one blue pen है. I have to select two pens without replacement. What is the probability that the first pen chosen is red, and what is the probability the second pen chosen is red? The first pen का तो आसान है, बराबर? It is very easy. How much it is?
बोल दो फटाफट बोलना चाहिए, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पेन इज रेड? सेकंड पेन का टेंशन ही नहीं हमने को, दो पेन सिलेक्ट करना है, उसमें फर्स्ट पेन हमको देखना है सिर्फ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पेन इज रेड? 1/3. I have two red pens, one green pen and one blue pen. टोटल 4 पेन है मेरे पास, उसमें से 2 लाल है। 2/4. 0.5. दैट इज 0.5 है ना, 0.5 50% प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला तो इजी है, ठीक है। अब इधर आओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड पेन चोजन इज रेड? नाउ इट विल बी अगेन केस स्पेसिफिक, है ना। क्या केस स्पेसिफिक होगा? देखो सेकंड पेन देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट पेन कैन आइदर बी रेड, कैन आइदर बी ग्रीन, कैन आइदर बी ब्लू। तो आपको तीनों केसेस को सॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा इसमें, समझ रहे हो। लेट, सुनो पहले सॉल्व करके फिर बताओ मुझे 5 मिनट्स में, आई विल गिव 5 मिनट्स फॉर दिस। लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट, ये ए1 बोलो उसको, ए1 बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड पेन, है ना। बी1 बोलो या ए2 बोलो या ए3 बोलो। अभी फर्स्ट पेन विल बी, इट कैन बी एनी ऑफ द थ्री ना, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। अभी सेकंड पेन रेड होने का, अगर इफ द फर्स्ट पेन इज रेड, सेकंड पेन रेड होने का चांस कितना है? if the first pen is red, what will be the chance of the second pen being also red? सिंपल है ना, 4 में से 4 पेन्स आर देयर, 4 में से एक पेन चले गया, जो लाल वाला पेन था वो चले गया, तो व्हाट नाउ हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट? 3 3 पेन्स आर लेफ्ट, उसमें से रेड कितना है? अभी 1 है। अभी 1 है। 1 हाँ, तो 1/3 हो जाएगा। तो इफ द फर्स्ट पेन इज रेड, very nice. 0.33 If the first pen is red, the probability that the second pen will also be red is 1/3. Is this clear? yes sir Second case है, first pen is green, non red है, green या blue है, second pen, first pen is green. So probability of second pen being red is how much? अभी 3 में से कितने रेड बचे? फर्स्ट पेन जब ग्रीन है, एक ही रेट बचा सर 1/3 होगा 0.33 ऐसा फर्स्ट पेन ग्रीन है ना, 2 रेड बचे। 2 रेड बचे ना सर 2 रेट बचे ना, एक तो हो गया ना, अभी सेकंड लेना अभी है। ग्रीन हुआ भाई। पहला केस छोड़, देखो तीनों केस को आपको सॉल्व करना है, फिर ऐड करना है इसको बाद में, समझ के, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, पहला पेन रेड है, तो उस केस में सेकंड पेन बीइंग रेड इज 1/3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस व्हेन द फर्स्ट पेन इज ग्रीन। सेकंड केस में फर्स्ट पेन इज ग्रीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड पेन आल्सो, ऑफ सेकंड पेन बीइंग रेड? नाउ ग्रीन इज गॉन, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2 रेड एंड 1 ब्लू, इजंट इट? तो 2/3 प्रोबेबिलिटी होगा। वैसे ही अगर ब्लू है, फर्स्ट पेन इज ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड पेन इज व्हाट? 2/3, इजंट इट? तो ये केसेस को मुझे बताओ, इसको क्लब करके यूजिंग योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अभी 3 केसेस हो गए ना, 3 केसेस अभी हमको अलग अलग केसेस है, वो तीनों को साथ में लेना है। बताओ, ये सिंपल, ये थ्योरम यूज करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बोलो, समझा नहीं आपको? केस समझ में आया ना? हाँ सर करो, सॉल्व करो। इट्स सिंपल इफ यू सी दैट सेंस, only thing you need to properly apply the theorem. Yes, all of you solve and tell me the answer. Take 2 minutes. हाँ, सॉल्व किए?
You have solved? Okay. Now see here. Simply what you need to 0.5 do. आएगा. हाँ 0.5 ही आएगा बराबर. गुड. Simply what you need to do is ये तो अपने पास है probability that is it is a red pen and second क्या है देखो उसमें इसमें कैसे डिनोट किया जस्ट सी for the first pen there are 4 pens so that it is clear. For the second pen we have separated. Let A1 be the event first pen red, A2 be the event as first pen green, A3 be the event as first pen blue. So probability of A1 is what? First pen red is 0.5. This is 1 by 4. Q 1 by 4 है because it may be any of the three na. So let B be the event that the second pen is red. So if first pen is red then only one of the 3 remaining pens is red. Isn't it? First pen red हो गया जैसे हमने डिस्कस किया तो probability of B of A1 is 1 by 3. On the other hand, if the first pen is green or blue, then the other 2 remaining pens are red. Probability of B on A2 and B on A3 is 2 by 3. ये हमने already discuss किया. Fine. So probability of the second pen being red is what? Probability of first pen being red and second pen being red into probability of first pen red plus probability of second pen being blue probability of second pen being red first pen being blue into probability of first pen being blue. समझे ना? समझा या नहीं समझा? ए फर्स्ट पेन के लिए लिया उसने बी सेकंड पेन के लिए सिंपल एज दैट. A1 फिर अगेन रेड को रिप्रेजेंट करेगा A2 रिप्रेजेंटिंग ग्रीन A3 रिप्रेजेंटिंग ब्लू. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. तो डाउट है तो पूछना इधर ही. अभी कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ने वाली है. नो डाउट्स? I believe it is understood by all. Anybody is there who is not understood? Fine. I'll just nobody is now having queries, so I'll just move ahead. ठीक है? आएंगे बेस थ्योरम पे. It is just an extension of total probability theorem. कुछ different नहीं है. Just an extension of total probability theorem. ठीक है? So it is given by Thomas Bayes. So क्या है? Given that the event A has occurred, what is the probability that any single event of those of B occur? पहला हमारा क्या था? We are just interested in the one event. Now again, what is the event B has occurred? जैसे हमारे एक केस था ना, ये वाला केस मैंने आपको जो बताया था, ये जो आपने केस सॉल्व किए थे इसमें, सेकंड केस, उसी तरह. So for that, Bayes theorem is directly applicable. So this is the theorem for given by Thomas Bayes. तो सिंपल है, इसमें एकदम टेक्निकलिटी में मत जाओ. and we'll directly take the numerical and you'll understand it very easily. Okay? Consider the ice cream salesman. Given that he sold all his ice cream stock, what is the probability that weather was sunny? Okay? So using the same notation, it is sunny. तो सारा स्टॉक उसका बिक गया. So Bayes theorem will be what? अभी आपको मैंने जो एग्जांपल मैंने पूछा था, आपको मैंने रेनी का पूछा था, ये सनी का सॉल्व किया. सिंपली व्हाट इट विल बी, probability of all stock has been sold. This is the condition which is given. A1 is sunny. ठीक है? तो for all three you can find out. sunny के लिए निकाल सकते हो, rainy के लिए निकाल सकते हो, cloudy के लिए निकाल. समझ रहे हो? Is this understood? 0.9 into 0.3 divided by 0.59. ये समझा? Yes, sir. Very nice. अब सेकंड देखो. If the prior probability of H that the road is wet is 0.3, then the probability that the road is not wet is not wet or dry is 0.7. If you use only this information, that is good to decide that the road is not wet. The corresponding probability of error is 0.3. समझे? रोड या तो वेट हो गया तो नॉट वेट होगा या ड्राई होगा. तो अगर नॉट वेट हम बोल रहे हैं इसका मतलब उसका corresponding probability is 0.3. Let us further say that the probability of rain is 0.3. Now if it rains, we need to calculate the posterior probability that roads are wet. ठीक है?
This can be used using Bayes theorem if 90% of the time when the roads are wet, it is because it has rained. और 10% टाइम ये हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी का कुछ क्लीनिंग चल रहा है ना, उसकी वजह से, या many other reasons are there, because of that the road is wet. Now उसने क्या किया है, using Bayes theorem, जैसे मैंने बताया, it has rained, ये तो कंडीशन कंफर्म है. What is the probability it is wet is 0.9. 90% दिया, 0.9 ही आना चाहिए. Simply if you see, it will be what, probability of x by h is occurred, that is what, the road is wet is there, and probability of rains ये कितना है, 0.9 है, because it is given, and this is what, probability of road being wet, and this is probability of rains. So again, because this is same, it has just cancelled out, and this is 0.9. We'll take another example. ये समझो उसको, example को. Consider the clinical test of say COVID-19. ठीक है? Consider the clinical test of COVID-19. Suppose that 1 in 1,000 of the population is a carrier of the disease. Okay. Suppose also that the probability that the carrier test negative. तो इसमें ये error है, biasness होता है ना. कोविड का टेस्ट बहुत सारे बार आपने देखोगे टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन बाद में डिटेक्ट हो जाता है ना. So suppose also that the probability that a carrier tests negative is 1%, और the probability that a non-carrier tests positive ये भी होता है, किसी को कोविड नहीं है फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है. So there is some, you can say, standard error which is there always in any testing. 100% कोई रिजल्ट एक्यूरेट हो, it is very unlikely. Probability is very less. Probability में बहुत सारा, you can say, there are various, nothing is free from error except, you can say, counting करने that will be free from error. Nothing, all other measurements will have some errors, है ना. So here probability that the carrier of COVID-19 tests negative is 1%, यानी उसको positive था, he had contracted the disease but still is testing negative is 1%, while the probability that a non-carrier test positive is also there, that is 5%, means he did not have COVID-19 but he still tested positive. Okay. Let A be the event that the patient is a carrier and B be the event that the test is positive. So A complement क्या होगा? Patient is not a carrier, and B complement will be the test is negative. समझ रहे हो? समझा नहीं समझा? अरे बोलो ना. हाँ सर. You should always compliment me ना. because आप अगर नहीं कुछ नहीं बोल रहे तो I'm just, because मुझे यहाँ कुछ स्क्रीन में दिख नहीं रहा है except my PPT. So we are given that probability of A. What is this? Probability of A is what? 1 in 1,000. ये इधर आ गया ना, carrier 1 in 1,000 of a population. अभी इंडिया में इतने सारे केसेस है, but our population is crores, है ना. अभी active cases we see just now, it is around 1,40,000 कुछ active cases है. Active cases in 1,35 lakhs is very less. उसी तरह कोई एक रीजन को उन्होंने लिया है, तो 1 in 1,000 people is a carrier of the disease. So that in that case this figure has come. समझा? इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0.9. नॉन कैरियर्स कितने हैं? ठीक है. What is this? कोई बताएगा? What does this signify? Sir, can you repeat? Sir, 1 in What will 1,000. this signify? This term, what will it signify? A condition दिया है. A condition दिया है. A means what? Carrier. A is a carrier. The person is a carrier. B is what? Test is positive. So if the person is a carrier and the test is positive, there is 99% of chance, है ना. 1% के इधर दिया है ना, test will be negative. That Yes, 1% is to be removed. Second is what? Test is negative. Sorry, test is negative. A complement is what? Person is non-carrier and test is positive is 0.5. Why? Because these chances are there. 5%. समझा ये? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Now see the case. A patient has just had a positive test result. What is the probability? What is the probability that the patient is a carrier? ठीक है. तो हमको ये फाइंड करना है. Probability of positive means what? B, है ना. Patient का result positive आया. What is the probability that he is a carrier of the disease? What is the probability that he is, है ना. वो ये 1 में आ जाता है. 1000 में से वो 1 में आ जाए, इसका कितना probability है? Simply what you need to do is इसका रिवर्स हो जाता है. इसका अगर आप बेस थ्योरम देखो, technically many things are there, but I am just simplifying it for you.
Bayes theorem, if this is A upon B, this will become B upon A in numerator. This will be probability of A and below will be probability of B. अब ये probability of B को उन्होंने क्या किया, expand किया. Expand इसलिए किया है तो probability of है ना, जैसे अपना ये theorem है उसके साथ उन्होंने expand किया पूरे को. Probability of B को पूरा expand किया. Probability of B will be dependent on A and probability of A and probability will be also dependent on complement. है ना, ये इसको expand किया है इस चीज को. Probability of B को पूरा एक्सपांड किया है, समेशन टाइप में उसको दिया है. समझा ये? Simply if we speak, if there is only one condition, so it will be what? Probability of A by B is equal to probability of B by A into probability of A and divided by probability of B. But this probability of B they have, तो इतने सारे केसेस है ना probability of B में. Probability of B, what is probability of B? That the test result is positive. So test result is positive, probability the patient is positive, है ना? And probability of patient being positive. And this is what? Test result being positive, probability of the patient is negative, and the probability of the patient being negative. समझा ये बेस थ्योरम का बेसिक फॉर्मुलेशन है. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, this is the same formula which I am explaining in a simple terms. What is this? Probability of test being positive, है ना? The probability of test result being positive and the patient being also actually being positive, actually being a carrier of the disease, है ना? So इसको truth बोलेंगे, ground truth, है ना? Probability of test result being positive and the patient also being a carrier is can be given by probability of test the probability of patient being positive and test result being positive. Probability of patient being positive, मतलब carrier, probability of divided by probability of test result being positive. समझा ये? इस टेस्ट रिजल्ट को पॉजिटिव आने के लिए टेस्ट रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव टू केसेस, एंड द पेशेंट इज अ कैरियर एंड द पेशेंट इज अ नॉन कैरियर. नॉन कैरियर के लिए प्रोबेबिलिटी इज कैरियर पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव 5%, कैरियर पेशेंट पॉजिटिव टेस्टिंग पॉजिटिव 0.05%. तो वो सारा चीज जब हम डालेंगे तो 0.99 0.7, so there is a chance that the patient is carrier is 0.10194, है ना? Almost 2% chance है that patient is positive. समझा ये? नहीं समझा? Yes, sir. नहीं समझा तो बोलो. ये पूरा फॉर्मूला है. The formula is directly given in the exam. You need not derive the formula. ये फॉर्मूला आपको समझना होगा. ठीक है, फॉर्मूला समझना होगा and you may memorize it, but always remember you may make mistakes. So always remember how this formula has come. It is simple as probability of A by B is probability of B by A into probability of A divided by probability of B. अभी जब probability B होगा उसको उसने expand किया. Probability B by A into probability of A plus probability B by A complement into probability of A complement. इस टर्म को उन्होंने expand किया. क्यों expand किया? because B space इतना सारा B का पूरा space है ना, उसमें various different elements है. सबको जब ऐड करोगे भी इंडिविजुअली यू विल गेट दी सेम थिंग, है ना? समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. गुड. अब आते हैं ये समझा. सो प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट इज अ कैरियर इफ हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, है ना? प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट is a carrier if his test result is positive, how much? 0.0194%, that is only 2%. ठीक है, समझ रहा है? समझा? हाँ सर. अभी आगे देखो. Patient has just had a negative test result. What is the probability that the patient is a carrier? अभी देखो, patient negative है ना? What is the probability? Probability is, if you see here, आप लोगों को कंफ्यूजन आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं, but okay, I'll clarify. The result is very low ना, 2% है almost. यानी उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 2%, मतलब although the result is positive but still 2% ही आया. ऐसा आप बोलोगे, ऐसा क्यों? Why? Because what we know is the population is, हमको ये चीज मालूम है कि सिर्फ एक आदमी इफेक्टेड है 1000 में से, बट इन रियल सेंस इज नॉट द केस, है ना?
रियल सेंस में हमको एक्चुअली पता नहीं है ना, वी डू नॉट नो, एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट प्रूवन दैट 1% विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो इसके लिए हमको अभी इस बार कंफर्म पता है कि एक ही आदमी अफेक्टेड है 1000 में से, सो 999 पीपल आर श्योरली फ्री फ्रॉम द डिजीज। समझा नहीं समझा? अरे बोलो ना, समझा नहीं समझा? Here only 1% is affected by the disease and 999% are free from the disease, और उसी सैंपल में से टेस्टिंग हो रही है and the result is positive. So वैसे तो देखने जाए तो only 0.001% उसका रिजल्ट आएगा because testing is positive है ना, इसमें only 0.001 if you have just the probability कि हाँ probability of disease कितना है, but result positive आया इसलिए उसका impact बढ़ गया because 99% of the time the results is correct है ना, इसलिए वो रिजल्ट बढ़ के दिस हैज इंक्रीज, the percent which was 0.001%, this was 0.001 in this case. Now because the test result is positive, we are saying that with some, at least some significance that it may be right, he may be a carrier. आगे देखो, a patient has had a negative result, what is the probability that the patient is a carrier? Negative है, that means what, this is this B complement, simply if you work on it पूरा उसका है ना, बी कॉम्प्लीमेंट से पूरा वर्कआउट करेंगे तो इट इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, तो नेगेटिव रिजल्ट इज ऑलमोस्ट जीरो, सो इट इज वेरी अनलाइकली कि उसका नेगेटिव रिजल्ट आए फिर भी वो कैरियर हो। सो पेशेंट with नेगेटिव रिजल्ट कैन बी reassured, but the patient with a positive result still has less than 2% chance of being carrier, so it is likely to, है ना, तो उसको 2% चांस, इसका मतलब थोड़ा सा उसको वरी होगा, बट स्टिल बिकॉज वी नो श्योर शॉट हमको मालूम कि 1000 में से सिर्फ 1% अफेक्टेड है, तो द रिजल्ट का जो है ना 100% उसको पॉजिटिव, 100% ही इज अफेक्टेड बाय डिजीज वेरी लो। ये समझा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? थोड़ा सा। थोड़ा सा समझा, आसान है ना ये, इसमें क्या समझने जैसा, ये फॉर्मूला नहीं समझा? फॉर्मूला इफ यू अंडरस्टैंड ना, बाकी इट इज ऑल जस्ट नंबर्स ना। फाइन, okay, we'll take another example, maybe it will be more clear then. Look here, 2% of the population have a certain blood disease in a serious form. ठीक है, एक particular blood disease है, 2% of people have it in a serious form, 10% have it in mild form, and 88% don't have it on all. ठीक है, new blood test is developed, the probability of testing positive is 9/10. If the subject has serious form, अगर उसका serious है 90% चांस है कि उसका डिटेक्ट होगा, माइल्ड फॉर्म में तो 60% चांस है कि उसके अंदर डिटेक्ट होगा, एंड 10% चांस है कि डजंट हैव द डिजीज फिर भी डिटेक्ट होगा। ये भी थोड़ा सा उसमें एरर होता है कोई भी टेस्टिंग में। आई हैव जस्ट टेस्टेड पॉजिटिव, है ना, आई मतलब नॉट मी, जो क्वेश्चन मैंने उसने, ही हैज जस्ट टेस्टेड पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई हैव सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज? ठीक है, so let A be serious form of disease, mild form of disease A2, A3 B doesn't have disease, B is positive, then we have given that A1 है ना, तो ये A1 A2 A3 का पार्टीशन बनेगा, so A1 is what 0.002, कहाँ से आया, इधर से आया, A2 is what 0.1, because sample में total population में only 10% of this disease, A3 is this, probability of testing positive when he is of A1 category is 0.9, testing positive when he belongs to A2 category is 0.6, testing positive when he is belonging to normal category is 0.1. समझा ये? Yes, sir. Yes. Thus, by the theorem of total probability, simply need to cross multiply by the weightage, 0.9 into 0.2, 0.6, तो 60.166% चांस है कि, और 0.16% चांस है किसके लिए, ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए, है ना, यानी 100 में से 16 लोग ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। समझ रहे इसका मतलब क्या है? Point B means what? B means what? The result is positive, test is positive. The probability of test being positive is 16%. And 100 लोग, 100 people if they go for testing, from that 100, 16 people will be tested positive. समझ रहे हो? ये समझा? 16.6% will be tested positive. Actually positive कितने हैं? 2 plus 10, that is 12% are only positive.
but because of this error and because of here भी error है ना, इसमें 10/10 होना चाहिए पूरा, but still is not detected. So because of this error, तो में से भले ही 12 लोग ही पॉजिटिव थे, उनको ब्लड डिजीज थी, बट डिटेक्टेड पॉजिटिव इज हाउ मच 16%. समझाएंगे? Now, if I have tested positive, what is the probability that I have the serious form of disease? तो मुझे A1 है, इसका क्या probability है? So what I will do, because there are so many people in the population, so probability that I have tested positive and I belong to A1 group will be probability of B ऊपर आ जाएगा इसमें numerator में B by A1 into probability of A1, ये numerator में चले जाएगा divided by probability of B, probability of B. Probability of B I have already computed here. This is given 0.108. तो ओनली 10% चांस है कि मुझे वो सीरियस फॉर्म का डिजीज होगा, इवन तो आई टेस्टेड पॉजिटिव, मेडिकल रिपोर्ट मेरी बता रही कि हाँ तुमको डिजीज है ये, लेकिन सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज होगा इसका सिर्फ 10% चांस है. स्टिल आई विल वरी कि 10% चांस तो नहीं है, ठीक है, बट इट इज रिलेटिवली लो. Similarly, last problem ले लेते हैं, फिर we'll close for today. 3 jar contain colored balls as described in table below. One jar is chosen random. What is the, if the ball is red, what is the probability it is came from the second jar? तो देखो jar है, 3 balls है, jar 1 में 3 रेड है, jar 2 में 1 रेड है, वैसे jar 3 में 4 रेड है. Likewise, this jars are there. One jar is chosen at random and the ball is selected. If the ball is red, what is the probability it has came from jar? तो simple numerical है. So one ball is chosen at random. तो second jar में से है, what is the probability? It is red. Sure short हमको मालूम it is red. What is the probability? Because अभी हमको सब वर्कआउट करना है, सबका पेन वाला प्रॉब्लम था, ऐसे हमको सारा चीज वर्कआउट करना है. तो A1 first jar is selected, second jar is third jar, red is the R is the one red ball, है ना? These are exclusive. तो 3 jar सर इसका भी पीडीएफ सेंड करेंगे ना? हाँ मैं सेंड करता हूँ इसके पीडीएफ में. You cannot choose 2 jars in the same time, therefore they are mutually exclusive. Because of this, a sample space are divided to partition along these 3 events. देखो jar 1 का है 1/3, 1/3 क्यों है? Because selecting this probability 1/3 ना, randomly select कर रहे हैं. All of the red balls है ना, इसमें कितने red balls है, इसमें कितने red balls है, इसमें कितने red balls है, तो बाकी के red complement होंगे. Of all the red balls in the first and third jar, तो इसमें भी ये red balls का set है. Some will be in first jar, some will be in second jar, है ना, दिया है ना. 3 are in first jar, बाकी का नॉन रेड क्या है 5. सेकंड में 1 is red, नॉन रेड is 5. थर्ड में 4 is red, नॉन रेड is again 5. So we know this will be, this complement is 5 and this is again 1 2 3 जो भी दिया है that is there. So the probability that क्या बोला उसने, if one ball is, if the ball selected is red, what is the probability is come from jar 2? Simply what we need to do is we need to find the probability of jar 2, isn't it? Jar 2 and it is provided in the red. So probability of jar 2 से आने का probability क्या है? jar 2 into probability of jar 2, तो simply it will be 1/18. जैसे jar 3 का निकाल सकते हो, jar 1 का भी similarly you can compute. Okay? So I will send this theorem से बाकी सारा, तो need not derivation and all this stuff, it is not expected at this any level. Base theorem and all you have done your M3 M4 आपने किए होंगे. यहाँ पे application point of view questions. Fine? Any doubts? No sir. No, sir. You just go through this presentation जो पहले 2 भेजा है and अभी का जो भेजा है, you just go through the presentations and I hope you will have some doubts afterwards. And then we'll end the presentation today and I'll send this in the group.